Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज enumerate the various types of nitrogenous fertilizers. And the second part of the question is asking about briefly describe the role and benefits of nano urea and neem coated urea in improving nitrogen use efficiency. तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड द सेकंड पार्ट इज आस्किंग अबाउट द benefits of nano urea and neem coated urea. So I think these benefits of nano urea, neem coated urea, sulfur coated urea, so these three are very important and these have been asked in past also. And types of nitrogen fertilizers we will also see how to approach this question. And this question was asked in the UPSC IFS examination, that is in Indian Forest Service examination of 2022. जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की, उसके 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. We all know that नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर एवरी टाइम इन न्यूज. तो इसलिए यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देम बिकॉज देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफ़ी बार फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी की प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से वो काफ़ी न्यूज़ में क्यों. सेकेंडली दे आर हाईली यूज्ड इन इंडिया, हाईली यूज्ड. अगर आप जनरली देखो तो नाइट्रोजन वर्सेस पोटासियम एनपीके की जो रेशियो होती है जनरली एनपीके इज 4:2:1, बट इंडिया में जो ये हाईली यूज्ड है तो ये ओवर 8 जा चुकी है. 8 रेशियो 4 रेशियो अराउंड 1 पॉइंट समथिंग है. तो दिस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैज बीन वेरी मच ओवर यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम सर्टेन ईयर्स. वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो द subsidies provided by government, that is why the nitrogen fertilizers always be in news. तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखने होंगे बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये हमेशा करंट अफेयर्स में रहता ही रहता है. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ nitrogenous fertilizers. What are the types of nitrogenous fertilizers? So the first type is the urea, the most commonly used fertilizer in India. ठीक है, जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज्ड होते हैं इंडिया में उसमें सबसे कॉमनली जो यूज होता है दैट इज यूरिया. And urea contains 46% of nitrogen. First one is it is most commonly used and it contains 46% of nitrogen and it is relatively cheaper as compared to other nitrogen fertilizers. Relatively inexpensive. That is relatively less expensive when compared to other types of nitrogen fertilizers. That is why it is very much highly used. Secondly, we have ammonium nitrate, and urea is also government gives a huge amount of subsidy to urea also, making it more cheaper at very negligible cost. So this was about urea. Secondly, we have ammonium nitrate. This fertilizer contains both ammonium and nitrate forms of nitrogen. से नाम से पता चला ammonium forms भी इसमें रहती है और nitrate forms भी रहती है. That is why it is named that ammonium nitrate, and that is why इन्हीं दोनों फॉर्म्स के रहने की वजह से इट इज वन ऑफ द क्विक रिलीज एप्लीकेशंस. इट इज जनरली यूज्ड फॉर सुटेबल फॉर क्विक रिलीज एप्लीकेशंस, जहां आपको जल्दी से रिलीज कराना है फर्टिलाइजर्स को, आप चाहते हैं जल्दी इफेक्ट करे फर्टिलाइजर, तो वहां हम लोग अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं. थर्ड वी हैव अमोनियम सल्फेट, दैट इज इट प्रोवाइड्स बोथ नाइट्रोजन प्लस सल्फर, नाइट्रोजन plus sulfur to plants, and it is particularly useful in alkaline soil. It is generally useful in alkaline soils. It is useful in alkaline soils. Next we have the ammonium phosphate fertilizer, that is it contains both nitrogen and phosphorus. Okay, and generally with these two nutrients, and generally we know that Indian soils lack nitrogen and phosphorus. They are generally good in Indian soils are rich in potassium, but they lack in nitrogen and phosphorus. So this fertilizer ammonium phosphate provides a balanced nutrient source to plants. Balanced nutrient source because of presence of both nitrogen and phosphorus in a single fertilizer. Next we have calcium ammonium nitrate, CAN. It is commonly known as CAN or CAN, you can say. It is a nitrogen fertilizer with balanced composition of nitrogen and it is less hygroscopic compared to other nitrogen fertilizers. यहाँ पे आप देखो तो
nitrogen is in balanced quantity, and it is less hygroscopic, less hygroscopic compared to other nitrogenous fertilizers, compared to other nitrogenous fertilizers. Next we have anhydrous ammonia. It is generally gaseous ammonia. Gaseous ammonia. It is the gas form of ammonia, which is injected into the soil, providing highly concentrated nitrogen source. So generally all the fertilizers we spray or we spray into the soil, but it is gas and it is injected into the soil. Suppose it is our soil, so it is injected inside the soil and it is the gaseous forms of nitrogen, and here the nitrogen is in very high concentrated source, high concentrated source of nitrogen. So these are the generally 5-6 types of nitrogenous fertilizers, and the most important in these are urea. Okay, so I hope you are able to understand this. Now let's move to the second part of the question, that is benefits and roles of neem coated urea and nano urea. We have also one sulfur coated urea, which has also similar benefits. So if they exchange in the question that in place of neem coated urea they give you sulfur coated urea, so you can also approach the answer like this only. Okay, that is why I have written sulfur coated urea also here. So the first and most important benefit is solar release. What happens due to, suppose this is the fertilizer, it is coated with neem. What happens slowly, first neem gets degenerated, then slowly the fertilizers start, the availability of fertilizer is slow into the soil. That is why due to the slow release, the plants are able to use it more efficiently. Plants use it more efficiently. अब क्या मान के चलो आपको भूख है, ठीक है, अगर मैं आपको भूख है, आपकी जनरल डाइट है 4 रोटी और मैं आपको 10 रोटी लाके एक साथ दे दूं कि लो भाई 10 रोटियां खाओ, तो बेसिकली आप 4 रोटी खाओगे. इफ योर डाइट इज ऑफ 4 chapatis and I will suddenly give you 10 chapatis when you are hungry, you will not able to eat all, you will be able to only 4 chapatis, and those the remaining 6 chapatis will be lost. So that is what happens in the fertilizers also. When the fertilizers are quickly released into the soil, the plant is not able to use it efficiently, and the most of the fertilizers are released into the groundwater and making the groundwater pollution, increasing the groundwater pollution. So what happens, due to slow release, the plants are able to use it more efficiently. Secondly, they have other properties also, such as neem coated urea has pesticidal properties due to presence of neem. Pesticidal properties due to neem. In sulfur coated urea, we also get nitrogen plus sulfur with it, and sulfur is very important micronutrient when it comes to the requirement of plant. For nano urea, it is generally nicely absorbed by plants. Nano urea is nicely absorbed by plants, increasing the reducing the wastage of the fertilizers. Next, enhanced nutrient uptake, simply which we saw, it reduces nitrogen losses, क्योंकि स्लो रिलीज होता है, नैनो यूरिया अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट अपटेक इनहेंस हो जाता है. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ओवर, ऑब्वियसली इफ दे विल रिड्यूस द लीचिंग प्रॉब्लम्स अगर रिड्यूस होगी तो ये फर्टिलाइजर रन ऑफ होकर के अदर सोर्सेस में नहीं जाएगा, लीच करके ग्राउंड सोर्सेस में नहीं जाएगा, तो इट इज मोर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. Crop productive, obviously the crop will be able to absorb it nicely and hence their productivity will be huge. One more major benefit is that these fertilizers can't be diverged to other sources, diverged to other things. Many times what happens, जो ये fertilizers होते हैं इनको अदर इंडस्ट्रीज में डाइवर्ज कर दिया जाता है, बिकॉज सपोज वी हैव यूरिया क्या हो रहा है, फार्मर्स को सब्सिडीज में मिल रहा है, तो अदर इंडस्ट्रीज इनको की एमोनिया का जरूरत है, नाइट्रोजन का जरूरत है, या क्या करते हैं, फार्मर्स से डीलप कर लेते हैं, उनको यूरिया सब्सिडी में खरीदते हैं, उनको थोड़ी सी अधिक प्राइस दे देते हैं, और ये यूरिया डाइवर्ज होकर अदर सोर्सेस में यूज होता है जहाँ पे कि वो काफी पॉल्यूशन वगैरह फैलाता है. इसीलिए नीम कोटेड यूरिया अगर हो गई, सल्फर कोटेड यूरिया हो गया, नैनो यूरिया हो गया, इसको अदर सोर्सेस में, अदर इंडस्ट्रीज में डाइवर्स करना है विथ नीम कोटेड, सल्फर कोटिंग एंड नैनो फॉर्म्स, इट इज डिफिकल्ट. सो ये भी एक मेजर बेनिफिट है. So these are the benefits and roles of neem coated urea and nano urea. These are the reasons why they are good for us, and these
and the major reason is a slow release. That is why slow release plus enhanced absorption. These are the major reasons why they are very good for increasing nitrogen use efficiency. So I hope you are able to understand things. जो भी क्वेश्चन में मैंने बताने की कोशिश की आप अच्छे से समझ पाए होंगे. So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबके बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.